Okay, so it's a short video to brief you about how will you start working with the Flex software. So first of all, after installation, you'll get the shortcut of the software. You have to right click on it and you will run it as administrator. So once your software is open, your software is open, you'll see two screens. One is a black screen, you will minimize it, and then you will have a GUI. Okay, so start working with the software. You will click on File, New, and you will choose a file type as Lex. Now, once you will choose a Lex type, you can see that there is a predefined sections of the code given to you. So the code is divided in three sections. First section is called as declaration. Second section is called as pattern and action. And third section is called as functions. Okay. So every section is separated by double percentage sign. So you will see the structure like this. So which means before this two double percentage sign, you have a declaration. After this sign, you have a pattern and action. Then you will get one more separator section, separator sign. Then you will have the function. So let's see the code. This is your declaration section. This is your pattern and action section. And this is your function section. Fine. The block diagram of the Lex software, I have already briefed in a theory class. So you can refer to the theory notes. Okay. So now let's take an example. We are going to enter the input. So basically Lex software is used to design the lexical analyzer, which means if you will give the input, it will count the tokens or it will divide the tokens as per the rules that you have defined in a rule section, which means pattern section. So let's take an example कि आप एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हो जिसमें आप इनपुट में आपने क्या इनपुट करा है उसको काउंट करोगे. फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर इनपुट करा है तो कैरेक्टर काउंट करोगे और डिजिट इनपुट करा है तो डिजिट काउंट करोगे. So I have declared a counter C to count the number of character. In a similar way, I'm taking a counter D also to count the digits. For example, अगर मैंने input करा है DIT, so it should give me number of characters equal to 3. Now suppose my input is DIT 01, so it should give me characters are 3 and digits are 2, right? So declaration is complete. Now I will define the pattern. To identify the character, character can be in a small letter or character can be in a capital letter. So my rule is small a to z and capital A to z, right? Now I'll give a single space, then I'll write the action. So what will be my action? If it finds small a to z or capital A to z, it should increase my counter by 1, right? Now digit का हम rule बाद में बनाएंगे. Input के बाद आप क्या करते हो? Enter key press करते हो. So I am identifying the enter key. So if the enter is pressed by the user, then what it should do? It should print the number of characters. It is following simple syntax of C language. So I am printing the number of characters, right? Now my rule section is complete. I will write the main function now. So in a main function, I have written enter input. And I will use a special function that is called as y/lex. Now what is the function of y/lex? When you will give the input, you know that compiler always scan your input from left to right, character by character. So Lex will take first character. It will scan first character D.
It will go to the rule section and will match. There are two rules written over here. एक आपने लिखा है A to Z और एक आपने लिखा है /n. तो ये दोनों रूल से मैच करेगा. अब जो D है वो एज ए कैरेक्टर रिकॉग्नाइज हो जाएगा. तो इट विल परफॉर्म द एक्शन. तो C की वैल्यू ये क्या कर देगा 1. इट विल गो टू द नेक्स्ट कैरेक्टर I. अगेन ये इस वाले रूल से मैच हो जाएगा. तो C की वैल्यू 2 कर देगा एंड सो ऑन. नाउ सपोज करिए अगर मैंने यहाँ डॉलर भी लिखा होता तो ना तो रूल नंबर 1 में डॉलर है और ना रूल नंबर 2 में डॉलर है. तो डॉलर विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय योर लेक्सिकल एनालाइजर. सो वाई लेक्स का क्या काम हुआ? आपके लेफ्ट टू राइट इनपुट को स्कैन करेगा और रूल से मैच करेगा. अगर रूल मैच हो जाएगा तो एक्शन परफॉर्म कर देगा. अगर रूल मैच नहीं होगा तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा. राइट. अब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे. आपको जहां भी सेव करना है यू सेव दिस प्रोग्राम. बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इसका एक्सटेंशन क्या रखना है .l. तो मैं क्या कर रही हूँ इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ और इसका एक्सटेंशन मैं रख रही हूँ .l. सेव हो गया. अब आपको मैंने बताया था आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं. पहले आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे और उसके बाद आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. राइट. तो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+1. नॉर्मली टर्मिनेट हो गया. Ctrl+2 बिल्ड करने के लिए अगर आप यहां पर देखें तो लिखा भी हुआ आ रहा है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है. एंड देन आप लिखेंगे, देन आप परफॉर्म करेंगे Ctrl+5. अब आपका प्रोग्राम चल गया. मैंने लिखा DIT. नंबर ऑफ कैरेक्टर आ गए 3. राइट. अब क्या करते हैं, अब एक बार और इसे रन करके देखते हैं. मैंने लिखा DIT01. अब DIT तो रिकॉग्नाइज हो गया 3 कैरेक्टर, बट 01 को उसने रिकॉग्नाइज नहीं करा क्योंकि मैंने उसका कोई रूल नहीं लिखा है. अब क्या करते हैं, डिजिट्स को भी रिकॉग्नाइज करने का एक रूल लिखते हैं. सो डिजिट्स विल बी इन बिटवीन 0 to 9 और एक्शन हम क्या परफॉर्म करते हैं D++. अब यहां पर आपने कैरेक्टर डिस्प्ले करें. इन द सिमिलर वे हम डिस्प्ले करते हैं टोटल डिजिट्स विच इज इक्वल टू %D. एंड C के साथ हम क्या डिस्प्ले कर देते हैं, D को भी डिस्प्ले कर देते हैं. सेव कर दिया. Ctrl+1 कंपाइल किया. Ctrl+2 बिल्ड करा एंड Ctrl+5 एग्जीक्यूट करा. Now I am giving DIT01. So number of characters are 3 and number of digits are 2. So I hope the basic programming is clear to you and the structure is also clear to you. So I'm stopping over here only. It was the only introduction and I hope the things are clear to you. If there is any confusion, you can talk to your lab teacher or you can consult me in the class.